Sorry, time. Okay, so we can implement multiple stacks. Let us discuss it on another day. Let us discuss a new topic today. आपकी यूनिट में फिर आपको this is फिर we'll come back to this. हम पढ़ेंगे we are studying queues. Okay, so far we have studied कुछ data structure हमने पढ़े हैं, जैसे हमने stack एक data structure पढ़ा है और अभी हम पढ़ेंगे queues. Stack is कशर पे वनो आत चट्टा चटा आसान queues गए कशर पे वनो आत line सस line च बनावा अख counter छ आसान कुन जाय for example बैंकस पे ते अत छ आसान नफर प्यारान line छ आसान बनावित इस पे ते अख ब्याक नफर छ हम छु यमिस पात लगान. Can you see this? So they form a line. जो पहले आता है वो लाइन के स्टार्ट में होता है और उसका काम पहले निकलेगा, जो बाद में आता है उसका काम बाद में निकलेगा. ठीक है. सो दिस इज अ क्यू. इंग्लिश पे बनाना क्यू यू ई क्यू. क्वेश्चन पर छाता ना लाइन बनाओ. इट फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या गो? कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन आपको आ रहा है? Yes, sir. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को यूज फॉर गॉड ई तेमिस ई क्यू सुई near god. Stack is ulta. Stack is like ak baltin, which means to stack शो ak baltin आयु कौन तरह baltin बताऊं. Okay, she baltin आत्म ak palette दिवान सुस्त्रावन सात्मज at ब्याक plate सु at pet सु ब्याक palette at pet सु ब्याक palette at pet सु ब्याक palette at pet. The last plate av last such as last in first out. मैंने ले baltin मस palette से कड़ने स्कित पेट कड़ोन. बड़ प्लेट आत्मस बाल्टी न लास्ट सु कड़ोरी को चट बनो मन बाल्टी मन प्लेट अनु. ठीक है. सो इट यूज अ लास्ट एंड फर्स्ट आउट बट क्यू यूजेस अ फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट. ठीक है. Yes. कितना समझ आता है? अगर कशीर हज क्यू छ आसान सो छ इथ पट छना आसान तो छ विचमस आछना हीप सो छ इन छ सेरी एक विक्स कलस फट खिदमत एनीवे just for fun so how do we implement queues are very important in computer science. Queues are so important करीब करीब जो हर कुछ जगह queue use गए पे stack जो हम प्रोग्रामिंग में वारे लट यूज queues जो गए यूज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते परो तय परवा queues आत्मस कुछ जगह. have you studied queues in operating system? Sir, थोड़ा. hello, is there anybody? क्यू होती है मतलब फॉर एग्जांपल का प्रोसेस शेवन P1 पछिमा P2 पछिमा P3 पछिमा P4 गॉड इस प्रोसेस शेवन ये छ गॉड एमसी छ गॉड हक काम करनो पत यूज पता पत यूज पता so first process has more right to do, so we store the processes in a queue called a process queue. ठीक है. कराने process queues में store. इधर कहीं से ब्याक form of queue तच वना priority queue. तथ में छ इवान यम processes मगर हर कहीं से अपन priority तथ में छ सो process गड़ दिवा या priority छ आसान ज़्यादा. We'll study that also. इधर पर छ keyboard छ for example. keyboard में जल्दी का टाइप जो करा A B C D E F G H keyboard छ आसान पने ना queue अंदर buffer queue छ तथ में switch queue हिसाब से युस ती गॉड ने कैरेक्टर छ त्रावा switch तथ में गॉड त्रावा switch पर कंप्यूटर से गॉड वाता है. So this is a form of किस तरह से queue बनता है. ठीक है.
Yes. Okay. So let us discuss Q key. As with any data structure, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्टैक हमने पढ़ा, स्टैक का हमने दो तरीके से देखा. एक हमने रिप्रेजेंटेशन देखा स्टैक का, एरे रिप्रेजेंटेशन. I have discussed this array representation and I have linked representation. زٕ طریقہٕ چھِ آسان array تہٕ linked. ہر کُنہِ چھُ پنُن فٲیدٕ تہٕ پنُن نۄقصان. یِتھے پٲٹھۍ چھِ Q چھِ مےٚ کمپیوٗٹرس منٛز کَرٕنۍ سٹور. اَتھ تہِ چھِ زٕ طریقہٕ. اَتھ تہِ چھِ اکھ طریقہٕ array representation and linked. پتہٕ چھِ linked منٛز ترٛےٚ option اَسہِ available. اکھ چھِ singly linked, اکھ چھِ doubly تہٕ بیٚیہِ چھِ circular. अच्छा सोचुन कुछ चीज सिंगली रोजा बेहतर, डबली रोजा बेहतर, सर्कुलर रोजा बेहतर, कुछ situation कथ मस रोज ज्यादा better, that we have to see later on. But these are the two representations. How do we represent queues using arrays and how do we represent queues using linked lists? Let us start with linked lists because it's easier to understand it through linked lists than to simulate it using a stack. Then but stack something solve. Say we have a root node. In this queue, we maintain two references. One we call as head, not head. One we call as front. Big front, big rear. Two pointer chess maintain kara. Aksh pointer kara front, beaksh pointer kara maintain rear. Rear aspects insertion gasan. Rear karo is used for insertion, front karo is used for removal. Two pointer we will maintain in an array. जिस तरह से हमने last pointer किया था, tail किया था, एक pointer maintain singly linked list में, इसमें भी हम दो लेकिन करेंगे maintain, क्योंकि queue के दो side होते हैं. Every queue, if we have a queue, a line, it has two sides. One side जहां से लोग आते हैं और दूसरा side जहां से लोग जाते हैं. ठीक है? So जहां से लोग जाते हैं, it's called the front of the queue. और जहां से लोग आते हैं इस queue में, it's called the rear of the queue. That's why we say insertion happens at the rear and removal it happens at the front. ठीक है? Front से removal होता है और rear से insertion होता है. अब linked list में किस तरह से इसको use करें? How do we simulate using linked list? Not simulate, we operate properly. So basically we have a front node, we have a front pointer and we have a rear pointer. We create first node, half node say 3, godnuk node hours. Achun front the or kuni point karna wan the rear the MC kun point karna wan. ठीक है? Then empath our next node. Next node has always to be inserted on rear. So next node with a 6. This 6 will now this rear will go here. But this is linked like this. When I put back node 12. You 12 to current insert at rear. You should rear aspect insert current. Go, you see 12 should. He goes gasun. Rear gasman point 12 asko. Link asset point. You should arm linked list. Okay. Insertion cha hamish gasa rear aspect. When you back element 26. Again, you see rear chu. This will point to this insertion gasman rear aspect. Code क्या है pseudo code सोचो इसमें नहीं थोड़ी देर में. ये को क्यों use element इवान छु सुचु path कुन गसा मगर when क्यों
ये तो हम करते थे लिंक्ड लिस्ट में भी आमतौर पर लिंक्ड लिस्ट करना तथ में तसी कर लास्ट एलिमेंट ऐड कर ये बासान जन त लास्ट कर मगर वन ये रिमूवल कर when we have to remove when आव ऑप्शन और remove इत पे स्टैक तथ मज जो ऑप्शन पुश पुशस एलिमेंट अमे मतलब ये त्राव साथ मज बे पॉप पॉपस एलिमेंट त्रा सह ओरे कड़ान एलिमेंट सह एलिमेंट ओरे दिवान वापस इथे पे क्यूस मज जो ऑपरेशन वन एन क्यू गो यह त्रावन सा क्यूस मज ब्या ऑपरेशन तथ वन डी क्यू गो और कड़न सा कह एलिमेंट अत अवेलेबल सह एलिमेंट कड़वन सा ठीक है गो अगर और रिमूव ऑप्शन आव यानी कि DQ ऑप्शन आव DQ will always happen at front use the front aspect element so such cardon what is the front element 3 so this 3 will be printed the use the front show this will now point here ये link maklao इथे किन पातिल 6 करो print ये makle the front curve point over so you can see we have two pointers one is a front pointer and another is a rear pointer insertion will always happen at rear and this will always happen at front so let us discuss the pseudocode or the algorithm kis karo say first insertion khatir ya nq अच्छा function nq say 3 या 4 या 8 ठीक है nq किस पे करो nq go what does nq mean insertion का तच्चे आसा ये आसा rear aspect की नहीं आसा front aspect rear aspect what next step छ आसा करना लिखने 3 के लिख new node say new node छ बनावित कुंजे machine new node आत्म छ के डेटा ति और आव मतलब machine new node कशर पे insert करन इसमें last aspect insert करन it has to be inserted at rear so tu will to यहाँ की तरफ देखिए आप इस डायग्राम की तरफ इशू रियर इशू फ्रंट मैं चुका एलिमेंट ये मैं रियर पाथ इंसर्ट करूं ये न्यू नोड पे क्या लिखा व्हाट विल बी माय कोड यहाँ पर इशू न्यू नोड इशू में ये तक इंसर्ट करूं इशू न्यू नोड इशू में करूं रियर पाथ इंसर्ट मैं क्या छु लिखूं कोड मैं छु लिखूं rear rook next is equal to new node rear rook next to the null when karnaun by rear rook next new node as point and when chun rear when chun atmas go no element enter होता है rear करा या element as point when के rear point to the last element so rear will point to this इसी तरह के इनके नजर tail पर rear is equal to new node ठीक है ठीक है बेटा rear is equal to new node बस ये गो nq code ये तिका element enter च करन code as मज actually लिखो rear dot next is equal to new node rear is equal to new node so we just used one this that is called the rear as को rear use we did not use any other we did not use front we just used rear कोरा rear किसी next as मज को insertion the rear पकनो ब्रोड but what if we have the DQ the second operation is you got the operation here second operation is atmas guys tasuna DQ or new node chuna DQ gasan ke DQ go front aspect so element kadun sa that means you see use element issue karun delete I guess ya issue karun print so what will we say system dot out dot print ln क्या करो प्रिंट फ्रंट डॉट डेटा करो प्रिंट ठीक है DQ मतलब वो गॉडनिक एलिमेंट करियो सा प्रिंट बे करियो सा मज लाइन मज नेवर को गॉडनिक एलिमेंट च पॉइंट गॉडनिक एलिमेंट is pointed towards by front this pointer front so when I
get the DQ operation, I print the first item. So this was at the front of the loop, at the front of the queue. Then I'm patching maksad you friend you over what now. Course was no friend you over what now. So what should I write then? Black front is equal to front dot next. Bas. Front शुवन के सिद्धना बुत करनी तो कुन पॉइंट योकुन होता है नेक्स्ट उस करा पॉइंट्स उस करा योकुन ये पतिम एलिमेंट युस छु हालांकि अच्छे विनती लिंक के मौजूद but ये लिंक करने की ये गो गब at शुन कोई nobody is pointing towards this node that's why it is it lost we cannot retrieve it. Now the new friend becomes this. Suppose somebody calls DQ again, somebody should have baker if DQ, what will happen? You may line print. First line क्या गया print system.out.println front.data. So क्या शो ये इतना city data है. Then what will happen? Front is equal to front.next. Front को तो आए थे your. ठीक है? Yes. So we have two codes. Let me write. We have two types of codes. Rear is equal to rear. Sorry. Rear.next is equal to new node and rear is equal to new node. You go off code. Which code is this for? Sir, insertion. NQ insertion. The second code we have system.out.print front dot data. The front is equal to front dot next. Which code this is? This is for DQ, yeah, removal. These two data items we have. Now let us try to run these codes on a sample data structure. Okay, sample sawal, sample items. Say you get NQ5, then you get NQ7, then you get NQ23, then you get DQ4, then you get DQ1, then you get NQ3, then you get NQ2, then you get DQ4 का थी, sorry, DQ शिवन खाली, DQ शिवन खाली, DQ उसमें ज़ीने क्या कुछ variable. Then you have NQ9. Yeah, it is series or. So this is a series of commands. आपको ये commands आई. You got करें so 5 NQ पत 7 पत 23 पत करो सा DQ पत करो ब्याह कलमें DQ पत करो NQ पत करो NQ पत करो DQ पत करो 9. Okay? ठीक है? How do we do this using this code? But when the Q is big, got out the NQ5, current 5 line में insert. Then पता होता है NQ7, current 7. Then पता होता है 23, current 23. Then पता होता है DQ से कुछ element का remove. ये 5. Yes, DQ से front aspect का. Then पता होता है बे DQ से कुछ element का remove. 7. Go one gain का sprint 5 this 7. मगर तुम कैसे element array में remove. तब पता है NQ3, greater than 3. तब पता है NQ2. तब पता है DQ से कुछ element का remove. 23. So 23. Then पता NQ9. So 9. So Q as 3 to 9 to print as path kun gomut 5 7 throw. This is the way this should done. This should have been done. Now let us see यही चीज को हम करते हैं using diagrammatically which हो कि इस code as लोग इकरा ही के इकर बादल के. Okay, we'll see this code. जो हमने ऊपर लिखा है rear.next वगैरह. सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन NQ5. What code will happen? NQ rear.next node अक्ष front बीच rear. हमने लिखा है rear.next is equal to new node.
what is it rear dot next god chun keen when to the ak element chu when ma kor me this is a pseudo code when to the front the chu god net ekis khali node as kon point karate rear the ekis khali node as kon point karate we'll see that later on अच्छा condition लगाओ if it is loss लगाओ अगर god look element chu tel kar sab it's bit anyway suppose there is one node and we get this code nq5 what will happen rear dot next go this element okay should point to new node go in go new node after 5 okay so Yes. and then rear is equal to new New node node. when this rear you can when you work on point fine Yes, sir. then we have another question nq7 that was the command nq7 so rear dot next is equal to new node is 7 shake no node amut rear dot next सुशी के कारण सा point 7 इसको किसे ये line में ऊपर के मैं यही दो lines पढ़ रहा हूँ and then I have rear is equal to New node. then I have new open point rear is equal to new node rear and the open point then I have nq23 what will happen I have a new node called 23 what is the code rear dot next is equal to new node rear चाहिए क्या ये हमें next चाहिए so करना on point 23 है इसको करूँ then rear is equal to new node so this rear will not point to this now rear will point to this ठीक है Yes. you understand Yes, Yes. sir. suppose front chewing the same we'll fix that later then we have dq we have a dq operation dq dq is को चुका सुने कि ये system dot out dot print front dot data what is front dot data 5. 5. print कैसे 5 then what is the next line front is equal to front dot next where is front dot next front dot next is 7 when code gets front will now point to 7 you guys prove delete ठीक Yes, sir. then we have another dq operation in this dq operation what will happen again system dot out dot print front dot data what is in front dot data 7. come on it is 7 and front is equal to front dot next चाहिए 23 वो front the current point 23 इसको ठीक है in the past there is no pointer pointing to 5 and 7 therefore these 5 and 7 are lost we don't need to concern ourselves not z has built code in khali kara then we have an operation nq3 then we have an operation nq3 okay so we have a new node called 3 what is the code to write rear dot next is equal to new node rear dot next here so go here and then rear is equal to new node now the rear will not point to this the rear will point to this okay we have another operation nq2 what will happen what code rear dot next suppose this is the new node called 2 rear dot next is equal to new node rear dot next here kya this will point to the new node and the rear pointer this will point to the new node also ठीक है then we have dq क्या गया dq से यहाँ पर कोड ऊपर So 23. dot out dot print front dot data what is front dot data 23 front should I get it this is front can you see front Yes, sir. front has reached to 23 previously 23 का sprint then front is equal to front dot next now front will point to this location ठीक है बेटा then we Yes, have nq9
So this 9 will come here. What will be the code? Rear dot next is equal to new node. Rear dot next is 9 as print. Rear is equal to new node. Rear is just our data structure. If you will पान ते अगर घर ते बिहु ना करने तो तेरे पान है समझ के कुछ करन and issue करन इथे कहीं. So at the end of the operations, what has been printed? 5, 7, 23, and what is remaining in the queue? Let's say लेकर rear तक 3, 2 and 9. That is what we had said here. 5, 7, 23 का separate queue में रहता 3, 2 and 9. ठीक है? Yes. This is a way in which we implement a queue using a linked list. That is, we have two pointers called front. Akh pointer chu frontas asan, beak pointer chu rearas asan. Yel ti kah cheez insert chu karo, su karo us rearas pet. Aswan bar वने सिकत insertion से गसान rearas pet. Su क्या मतलब वो insertion से गसान rearas pet कि ये यम ज़लाइन. Rear dot next is equal to new node. Rear is equal to new node. That means use this insertion करा we use the rear node. पद मोर मगर DQL करना सासा करो फ्रंट एस्पेक्ट ये DQ कोर यानी एलिमेंट कोड सुकाते कोड सुकड़ने क्या फ्रंट पे Yes. एलिमेंट काटने भी इसको सिर्फ फ्रंट पॉइंटर यूज रियर पॉइंटर लोग ना आते था इधर पे एलिमेंट इंसर्ट करने भी इसको सिर्फ रियर पॉइंटर यूज फ्रंट पॉइंटर्स लोग ना आते की so that is what we do and you have to practice this. I hope you will practice this inshallah रहमान. आज की क्लास के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है. We'll go for with coding tomorrow. इतना क्लियर है? Sir. हाँ बताइए बेटा. सर लेकिन सर अगर हमें पहले जब अगर इंसर्शन करना होगा उसके लिए सर मत ये कोड इस्तेमाल होगा. मतलब क्या गोड अगर इंसर्शन इस करो मैं उन्हें समझ. सर फॉर एग्जांपल 5 कोड इज गॉट इंसर्ट सर मगर नेक्स्ट मा उस सता कहीं ना सर सो सर गॉड न्यू कोई. तो छु वना ये खाली छे क्यों? यस सर. ना बेवनु सवाल पन आने बिल्कुल सम. सर ये में खाली छे क्यों आसान. ये में खाली छे क्यों आसान ठीक. यस सर सर तेमिज मा गई सर ये कोड अप्लाई rear dot next तिके सर अत मन छु न कहीं आसान rear point. ये करो ते असल सवाल वाला असल सवाल. मैं तो बेकर पागा kan point ते मगर वो वने के विनी. This is विनी कोड लो. Against question छु सवाल छु कुरातुन what to do at beginning. If you godnet chest is a pointer front, to be actual pointer rear. Inchun kun point karam to dash hours mus. If you has off no node pano time we say 3. Once has godnuk node 3. Which has insert karni 3 node. ये अगर ऐसे insertion code लिखो insertion code चेस which mut rear dot next is equal to new node. The rear is equal to new node. Rear dot next का rear dot next assumption की है क्या इसके rear चुन कुंजाय point ही कराएं इसलिए कहते हैं rear dot next is equal to new node. कुछ चीज का new node असुन point. इतने चीज़ का there is no element in which can point. So what to do? For that cases special cases God नहीं slide इलेस कारुन चासा आप में if लगाओ if it is रात हस्ते यार रात हिल ऐसे God नुक element अस insert करुन ऐसे लगाओ ताल loop असमस if count is equal to 0 tel throw root asmus agar न count 0 was tel throw बाकी element mus इथे कहीं ची यात कोड असमस तो आत कोड अस थोड़ा हन हो राम आत कोड अस इस पर लेकिन अशाक variable pattern करन count या उनके कितना element चात mus if count equals 0 अगर count 0 ची tel ची अस लेकिन इस पर कोड tel ची न अस लेकिन rear dot next is equal to new के tel लेकिन सिर्फ rear is equal to new node अगर count 0 ची अगर count करो count as increment count plus plus अगर count 0 ची क्या else tel लेकिन rear dot next is equal to new rear is equal to new node. आवाज समझ? Yes sir. tel ची कोड थोड़ा बहुत z डाउन ते मगर सिंप्लिफिकेशन खतर छने चू थावा के क्या मे बी हमसे बाज कंफ्यूज समझ गॉर्डिनेट लट आसान हेचुन अछि लेखा एमी हवा युत बट एग्जैक्ट कोड छी इतपट अच्छा काउंट वेरिएबल पैटर्न डिक्लेयर करो ता 0 करूं ते पाछ करूं चेक अगर काउंट 0 छ गो यह गॉर्डिनेट की नोड आत में के एलिमेंट्स में कहीं तेल छ रियर ही करना न्यू नोड उस पॉइंट का रियर नेक्स्ट आसन तविस केन अगर आम हालात छ तेल करूं रियर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू रियर इज इक्वल टू न्यू नोड काउंट छ बाहर हाल इंक्रीज करूं काउंट छ तो करूं
इंक्रीमेंट। ठीक है, ये आवाज समझ? Yes, sir. ओके, बेमच कहाँ से हुआ? आज के जल्दी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करो, तुझे प्रैक्टिस करा। Yes, sir. नसरीन छा क्लास में? Yes, sir. नसरीन, इफ यू डोंट, मैंने आपसे कहा अगर तुम पेरेंट में आज किसी ने फोन किया ना मुझे, प्लीज कंसीडर योर एडमिशन ऑटोमेटिकली मूव टू बीएससी। इसने धमकी भी दीवान के बेसिस Sir. सीरियसली बना, प्लीज कंसीडर योर Sir, क्लास मैं आज के बाद ऑटोमेटिकली पढ़ूंगी मूव टू अच्छे से। बीएससी। आज के बाद पढ़ूंगी क्या होता है? आपके सारे YouTube के लेक्चर क्लास में अवेलेबल है। यू हैव नॉट सीन इवन वन YouTube लेक्चर। आप कर क्या रहे हैं? एंड यू आर नॉट इवन सेइंग कि मैं आऊं ना समझ। तुझे की नशती व्हाट आर यू डूइंग? Please tell your parents to call me. Chalo, if you have any other questions, you can post it on Google Classrooms. If you can post on Google Classroom. Any other questions?